हेलो गाइस, मेरा नाम नील है। और मेरा नाम जय है। आज हम दोनों 2026 के अंदर जो 20 फ्री गेम्स आने वाले हैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर ये होगा, जो जो गेम्स हम देखेंगे आगे खेल भी सकते हैं, और जो आप कमेंट में बोलोगे वो तो खेलेंगे खेलेंगे। तो लेट्स गो। लेट्स गो गाइस। और बहुत सारा गेम है जिसके लिए एक्साइटेड है हम फ्यूचर में। जैसे अनंता प्रोजेक्ट बोल के जो ट्रेलर आया था उसके लिए हम एक्साइटेड थे। हाँ डेफिनेटली भाई, उनको हाँ। उन्होंने कहा था 2026 में आएगा। लेट्स सी। तो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, तो लेट्स गो देखते हैं और कौन कौन सा गेम है। Every January, I look forward at the best free-to-play games coming in the year ahead. I found over 50 of them, and I've whittled them down to a definitive list of the best 20 free games of 2026, across as many genres as I could find, from open-world RPGs to intense shooters, from survival games to sports games, and it's shocking how many anime games are coming out. All the expected dates and platforms are in the description if you want to know where you can play. I'm Adam. Hello there. Let's do this. ये हमारा कैरेक्टर। First up, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे एक्साइटिंग चीज है जो अभी दिख रहा है, ओपन वर्ल्ड और GTA क्या 6 तो भाई। आ ही रहा है। पर ये भी वो तो उसी लेवल का एक्सप्लोर करने वाले हैं हम तो भाई। the game everyone is calling anime GTA, Ananta. I've been following this game for years now without any real release date in mind, yet thanks to a Kotaku interview, we now know the game is being aimed towards a release date later this year, with the earliest we could see it in July. In terms of gameplay, Ananta blends countless other games into this open world of Nova City. The पर web slinging of एक चीज है, बोल। ये सेम टाइम GTA 6 का आने का बात कर रहा है भाई। ये तो भाई गलत मैं चीज हो कह गया रहा ना हूँ, भाई। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उससे पहले या बाद में रिलीज करेंगे, ये साथ में नहीं करेंगे क्योंकि उनको हाँ, भी पता है आसपास भी GTA करने 6 की से। हाइप हाँ, ये नहीं सह पाएगा GTA 5 की, अरे GTA 6 की हाइप। वही तो पूरा हाइप डाउन हो जाएगा। ये गेम एक सेलिब्रेशन है भाई, ओपन वर्ल्ड एनिमे कैटेगरी का गेम। आई एम टेलिंग यू, ये गेम तभी चलेगा जब ये जुलाई में रिलीज कर दें, क्योंकि GTA 6 की डेट ऑलमोस्ट फिक्स है, वो नवंबर दिसंबर में आएगी ही आएगी। लिहाजा अगर ये जुलाई में रिलीज होता है तो 6 महीने के ये लोग पे अंदर ये सेटअप बिठा लेगा, ये लोग पे दो ऑप्शन ही है, तो अर्ली रिलीज कर ले। अर्ली या फिर रिलीज थोड़ा लेट। करके या तो GTA का थोड़ा 6 का थोड़ा सा हाइप डाउन होने उसके बाद करे, नहीं तो और डूब मैं जाएगा। गारंटी से कह रहा हूँ गाइस, GTA 6 की हाइप 6 महीने से पहले नहीं गिरेगी। आई एम वही तो। टेलिंग यू, यू विल प्ले। आई एम टेलिंग यू, मतलब कोई नहीं, हमसे ज्यादा तुमको एक्साइटमेंट होगा जब हम उसको इस पे खेल के दिखाएंगे। वही और तो। आई एम टेलिंग यू, हम खेलेंगे। तू देख लेना Spider-Man, the tech कैसे खेलना hacking पड़ेगा। skills of Watch Dogs, the side quests of something like Yakuza, and the core moment-to-moment gameplay is most like GTA, including the character switch mechanic. The sheer volume of things to do is staggering, and that's not even mentioning the story campaign. We play as a supernatural investigator looking for paranormal events in the city. Our main goal is to subdue the mysterious force known as Chaos. There is supposedly no gacha elements in Ananta, with characters being unlocked through story missions. And there's so much to talk about in this game that I'm going to do a separate breakdown video in the next few weeks. So if Ananta looks like a game you want to play, be sure to check back for our deep dive. Coming much sooner than that is another anime-inspired world of Fate Trigger, coming in Q1 in fact, so between January and March. इसमें तो हम ये भी लोग सही है। भाई इसमें क्रेजी घुसने वाले हैं इसमें ना। हम तो सोच रहे थे जब ये चैनल स्टार्ट करने से पहले, इसका अगर ई स्पोर्ट्स आएगा ना, डेफिनेटली ट्राई करने वाले थे तो हम। अब अभी तो अगर हो सके तो हम करेंगे मेरे भाई। को देखो, मैं क्या गेम्स कम एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे तो ये एक्सप्लोर करवा रहा है। मैंने आज तक एक ही गेम, दो तीन गेम खेले हैं, जैसे GTA पहला जो फर्स्ट रिलीज हुआ था वो, वाई सिटी वो जो वाई सैटी सैन सैन एंड्रियास होता है। एंड्रियास वाला। हाँ, उसके बाद मैंने इस वैलोरेंट खेला है आज तक, पीसी गेम। और ये जो मेरा सेटअप मैंने अब बनवाया है, उसके बाद मैं इसके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सारे गेम नए हैं, फॉर मेनी पीपल लाइक यू एज वेल। तो मैं तो ये जहाँ खिलवाएगा, जिस ई स्पोर्ट्स पे ले जाएगा चले जाएंगे, जो कर रहा है करेंगे, लेकिन डेफिनेटली। आई एम एंजॉयिंग इट। ये सब गेम का ना क्रिएटर का ऑफ होता है। ट्राई करेंगे ज्वाइन करने का, पर जान लगा देंगे भाई। जान लगा देंगे भाई। हाँ भाई, मजा आएगा।
और तुम लोग एक्साइटेड ये हो? तो हमारी उम्र कम होती तो हम वैलोरेंट के टूर्नामेंटों में Fate घुस Trigger जाते। is a ये तो हमारे पास hero-based टीम नहीं है। tactical shooter with Battle Royale as its core mode. But if that doesn't float your boat, we've been promised other game modes will be coming in, starting with Team Deathmatch. Gameplay is both third person and first person. When we move around, the camera is behind us, showing us as much detail in the world as Jeff आ possible. गया। And then when we aim our weapon, it seamlessly switches to first person. Gunplay is definitely important, but Fate Trigger is more than a shooter, as each character has unique abilities, from spotting and tagging foes, to claiming the high ground instantly, or summoning cover to hide behind. The sheer amount of ways of synergies will work with other members of your team is what will keep this game fresh. New maps have already been announced, as the devs find what map size is right for the player base. And we've been promised a constant stream of new characters and brand new abilities to continually change the meta. Fate Trigger comes to PS5, PC and Xbox Series before the end of March, so keep an eye out for it. Let's take a break. एकदम क्लोज है तो आने ही वाला है। लेट्स और गो गाइस, हाइप इज इंटरेस्टिंग रियल। चीज देख भाई, तू देख इसके अंदर जेंशिन इम्पैक्ट वाले कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर वो अपने Fortnite। मार्वल डायवर्सिटी से जेफ वगैरह की एबिलिटीज है, वैसी एबिलिटीज है हाँ, इनकी। फोर्टनाइट वाला गेम प्ले। हाँ फोर्टनाइट वाला, और पबजी और फोर्टनाइट वाला वो जो पैराशूट वाला सीन, ये आप कहीं पर भी बिल्डिंग खड़ी कर पबजी से सकते हो। ज्यादा ये फोर्टनाइट को रिजेंबल करता है आई थिंक। पबजी से ज्यादा फोर्टनाइट को करता है। मैंने एक्चुअली पबजी के बारे में थोड़ा देखे हैं वीडियोस, तो मुझे इसलिए रिजेंबल वहां करने को मिल रहा है। From anime to look at a pirate RPG, Sea of Remnants. The पायरेट आरपीजी, art लेट्स style गो। is described as pirate punk, as we set sea in a huge open world, battling monsters and hunting for treasure. The exploration looks similar to Sea of Thieves, and depending on the boss fight, Sea of Remnants plays more like a Persona game, or Expedition 33. The trailers are using music videos to display the action, which explains why there's always lyrics in the bottom corner of the screen, which is pretty unique. On the seas we can go alone, but this is most definitely designed as a co-op experience and a true action RPG. While exploring, we can meet over 300 NPC characters, which, if we like, we can recruit to our ship. And we've been told that when night falls, all the tougher enemies and harder raids become available, making a day-night cycle that actually means something again. Sea of Remnants is going for a 2026 release, but I don't think it'll hit that. I hope I'm proved wrong. Coming much sooner, in fact on January 26th, is High Guard. This was the one... एक मिनट हो गया। हाँ, इन्होंने एक ही गलती की, इन्होंने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं ना सी ऑफ पायरेट के गेम्स के अंदर, वो कैरेक्टर में इन्होंने क्या किया, 3D मॉडल जो है वो बेसिक सा ही उठा लिया, बॉक्स मॉडलिंग करके उसी को उठा के डाल दिया, थोड़ा स्किन विन डालते तो मतलब एक हाइप आती। अच्छा पायरेट जैसा दिखाना भी चाह रहे हो तो पायरेट जैसा बहुत तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है एनिमेशन अच्छा है ना। नहीं हम बोल रहे हैं अगर ये लोग रिलीज करके अगर ये लोग का अच्छा गया गेम, तब आई थिंक बजट हाई कर सकता है ये लोग और रिलीज करना कर पड़े सकता है। भाई, बात ये नहीं है, बात ये आप बजट हाई भले ही कम करो, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए कम करो, आप बहुत सारी चीजों में मत इन्वेस्ट करो, पर जो कैरेक्टर आपके प्लेयर्स रोज देखने वाले हैं उन कैरेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, वो भी है क्योंकि वो पीपल अट्रैक्ट करते हैं। फिर से एक और फर्स्ट पर्सन शूटर है हाई गार्ड। Last thing at the Game Awards, and the internet totally melted down with hatred, probably because it wasn't Half-Life 3. High Guard is described as a first-person PvP raid shooter. The example given in the footage was a castle siege where the हमको इस टाइप का गेम पसंद नहीं है जेन्युइनली, जो attackers first had to claim a powerful sword in the middle of the map and then use that to summon in a battering ram to break through to the next objective. So ultimately we aren't just running around shooting freely, we have to play the objective. So Battlefield players should be better at this than Call of Duty players. No shade intended. High Guard is made by some of the devs who helped create Titanfall and Apex Legends, so this has oodles of potential. Being a horse-riding arcane gunslinger sounds pretty good to me. Coming January 26th. Sports fans, we have a few offerings for you this year. First up is Goals, a football game which is mainly arcadey in style but is packed with simulation traits like organising the team tactics and choosing your ideal team. And this is all based around a core mechanic of opening mystery card packs to build your squad. Unlike FIFA, Goals has no official backing and every player is randomly generated. There's no real world comparison, which some players will enjoy but others will not. Both male and female athletes play together on the same
same pitch, which is another one which will upset some people. Oh, and I've been playing the beta, and I can tell you how addicting the process of upgrading your characters daily is, especially with the mobile phone app while you're not at your console or PC. I had to delete this game because I kept thinking about it. Goals is coming in 2026 and is currently running beta builds on PS5, Xbox Series and PC. Another football game is Super Bowl, which is football but in the future. But really, it's Rocket League without wheels. Coming to PS5 in 2026, but it's out right now. ये इसके लिए एक्साइटेड है भाई. होंगे भाई. एक और ऐसा गेम आया था ना जिसमें आप कार्स के साथ ऐसी बॉल्स को गोल में डालने की रॉकेट लीग यही तो बोला, रॉकेट लीग. हाँ, बस तो ये मतलब उस टाइप के गेम्स बहुत फेमस हैं. रॉकेट लीग का ही है ना. रॉकेट लीग भी हम लोग खेलेंगे फ्यूचर में, पर आई थिंक अभी रॉकेट लीग अच्छा, बच्चों में ही बहुत फेमस है. मेरा छोटा भाई, मैं लिटरली उसको देखता हूँ, वो खेलता रहता है. तो आई नो कि लाइक मेरा छोटा भाई 9 साल का है. तो मैंने देखा बच्चों में ये टाइप के गेम्स बहुत फेमस हो जाते हैं. वो मतलब इतना हाइप होके और देखो भैया मार दिया. मैंने कहा यार भाई ठीक है, गोल मार दिया, अभी तो पूरा गेम बाकी है. रॉकेट लीग बच्चे लोगों का गेम नहीं है भाई, जेन्युइनली. भाई मैं मना नहीं कर रहा भाई, लेकिन बोल रहे नहीं, फन है. घर में बच्चों को ही खेलते देखा है. हाँ मतलब बोल रहे ये फन है एक कैटेगरी का. पर जैसे तू कॉम्पिटिटिव में घुसेगा ना, बुली करते हैं भाई बंदे भाई. कॉम्पिटिटिव को आप काउंट मत करो, वो हमेशा हर गेम के अंदर वो सीरियस है. कॉम्पिटिटिव चाहे किसी भी गेम का हो, वो सीरियस है. नाम में ही है. एक होता है नहीं कॉम्पिटिटिव मतलब एक होता है ना कि स्किल गैप, मतलब स्किल गैप रहता है, ठीक है ना. एक वर्ल्ड के टॉप प्लेयर और मिड टियर प्लेयर और लो टियर प्लेयर में स्किल गैप रहता है. तो यहाँ पर जो मिड टियर जो है ना, वो उसका स्किल लेवल पहुंचने के लिए तेरे को मिनिमम 5 से 6 साल का ग्राइंड करना पड़ेगा. अरे वो तो देख यार, ये तो हर गेम में. आज मैं तुम अगर वैलोरेंट में एग्जांपल ले ले, वैलोरेंट में तेरे को अगर अच्छा बनना है, तो अच्छा 3 महीना भी ग्राइंड कर लेगा ना, तेरे को उस लेवल का एक मिल जाएगा कि हाँ तू गोल्ड प्लेट प्लेयर को मार देगा आराम से, कंपटीशन दे देगा, तेरा एम है वो ठीक है. बट वो फिर एवरेज लेवल रह गया ना. आज तू गोल्ड और प्लैटिनम पर रॉकेट लीग का एवरेज वही है. तू अभी खेला नहीं है ना, तू समझ नहीं पाता स्किल गैप भाई. हाँ ये हाँ तू मतलब एक मैंने खेला नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो आई कैन नॉट लाइक. सोच एग्जांपल ले ले, तेरे को ऐसा फीलिंग आएगा, तेरे को फीलिंग समझाते हैं कि तू स्टार्ट किया गेम और तेरे को रेडियंट के साथ खिला रहा है. अरे भाई वो वाला फीलिंग आता है. फिर तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई बुली हो गए. Now in early access on PC and Xbox. The core difference to Rocket League is the characters. Each of our heroes has their own abilities to use on the field, and the holy grail is using those abilities alongside your teammates to bamboozle the opposition completely. From what I've read on the forums, the netcode has already been improved vastly, so Super Bowl could keep growing in 2026. Take a look at World of Tanks Heat, a vehicular warfare game set in an alternate world after World War II. A new type of war has begun where everyone uses a high-tech tank. In 5-on-5 or 10 versus 10, we team up and select our tank, and of course each one has its own strengths and weaknesses, forcing players to think about the makeup of the entire team. Supporting each... हाँ इस टाइप का गेम ना हमको मतलब सस्टेन नहीं कर पाता. कोई वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता. 1-2 मैच खेले हो गया मेरा, वही है, ऐसा ही है. Each other to maximize your strategy, but of course there'll be one guy who just goes out all alone. Game modes include conquest. हाँ अगर ये लोग अगर कमेंट में डालेगा, अगर ये लोग अगर इंटरेस्टेड है, बार-बार लिखोगे तो बिल्कुल खेलेंगे. हाँ domination and even search and destroy, which will be hella interesting playing as a tank. Over time, more agents will be added to the roster, unlocking new experimental tank tech. The speed of a first-person shooter and the firepower of futuristic tanks. This could be a game changer. And of course, there's another game doing a very similar thing at a very similar time. This is Loaders, a 10-on-10 battlefield where all cover can be destroyed, blasting through rock, shattering walls, plowing through sand dunes, which dynamically change the terrain. These vehicles are anti-gravity tanks that are totally customizable from the defensive options to the weapons we use. It'll be interesting to see which tank warfare game wins out in 2026. Loaders versus Heat. Hey! ये वाला PS गेम ही होगा मेरे ख्याल से अभी तक. We haven't spoken about
free-to-play anime games in a whole minute, so let's do that now. Let's go. Neverness to Everness. Earlier I called Ananta Anime GTA. Well, in fact, this open world gacha RPG wants that title too. We live in a bustling city where supernatural entities live side by side with भाई ये लोग कंपटीशन करेगा हम लोग सब खेलेंगे भाई humans. Our job is to investigate those anomalies, and if they're dangerous, we must neutralize the threat. Each narrative point is in its own chapter, and each one has its own vibe. So one minute you'll be playing through a spooky horror story, and then the next mission will be more like a comedy. The vibe changes constantly. Neverness to Everness is packed with things to do, like journeying to the arcade to play a spot of Tetris. We haven't looked at combat, but I think the visuals speak for themselves, which looks a lot like all the other free-to-play anime games to me. If you've played it, please let us know the difference. Anyway, the final tests are happening right now, checking if PlayStation 5 players can play alongside PC players without any technical issues, and also checking if cross-progression works perfectly with mobile players too. Neverness to Everness is expected to launch in Q1 of 2026, so we should hear more before March. Coming later in the year is Once Human, a PC game from last year which is coming to both PS5 and Xbox Series. Once Human is a multiplayer open world survival game set in a post-apocalyptic world. I know you've heard that many times over the years, so here's the intriguing part. An extraterrestrial substance can be found in the world called stardust. And if we spend too long around it, it reduces our sanity and eventually transforms people into heart-stopping beasts and creatures. This is mainly a PvE experience, but there are also some raid zones for PvP players to have their no-holds-barred face-offs. We have a core story to follow, but we can do our own thing too, exploring the world and discovering boss fights, puzzles to solve, and random strange encounters that will make you question what is real, like a mirror dimension, where inanimate objects are actually alien creatures. Reviews on PC are generally favourable, so we console gamers will get our chance ourselves later this year. Back here in January, another PC game finally comes over to console, as 2XKO hits PS5 and Xbox Series. 2x Okay. 2x किया तो भाई खेल के भाई ये crazy भाई मेरे लिए easy हो गया अभी. In this one, we are taking the characters from another Riot game, League of Legends, and forcing them to fight one another. The reason it's called 2XKO is because there's 2 players per team trying to knock out KO their opposition. This is made for you and a friend to play together and tag team attacks. But there is also a solo mode too, which keeps that team mechanic. The game comes with an in-depth training mode to perfect combos and master moves in frame analysis. PS5 and Xbox, you'll get this on January 20th. And speaking of Riot Games and League of Legends, a new refresh is coming to League in 2027 that will reimagine the source material to bring in new players. So if you've wanted to try but never really figured out how to get involved, this could be the moment for you. They will rewrite the game's foundations to allow faster updates in future dropped across all platforms. League of Legends Wild Rift was the mobile version of this, and it was going to become a console game, but it was cancelled as the touchscreen controls didn't translate to controller as well as they wanted. And the other side of the issue is the amount of buttons needed for the PC version is instantly too complex for casual players. So 2027 will change all that, and hopefully League of Legends becomes less frightening to be a new player of. A game expected to make a huge impact in 2026 is Unending Dawn. It's another gacha game, but unlike all the others I've played, this has deep and challenging combat. Essentially, Unending Dawn blends Genshin Impact with hardcore Souls-like combat to create a dark apocalyptic open world following the Cataclysm. A super unforgiving game with a high skill level where timing attacks and parries is paramount. Just over a year ago, following investment from Sony, Unending Dawn went dark on social media and have only posted once since then to ensure gamers the game is indeed coming. But just look at it, this could be revolutionary for both gacha games and Souls-like games. I'll keep you posted as soon as we know more. Do you remember Quantic Dreams, the team behind amazing games like Heavy Rain and Detroit Become Human? Well, their next game is a MOBA. Detroit Return Human जब आया था भाई भाई सब लोगों को इतना वो हो गया था क्रेज कि खेले भाई बहुत इमोशनल स्टोरी है भाई. Spellcasters Chronicles, a real-time strategy battle arena in which we play as powerful mages fighting each other for control of the source, a mysterious energy that can change reality and fate. In teams of 3 we cast magic, summon minions, buildings and even god-tier titans.
Everything in this game depends on territory, so we have to claim more land to be able to summon our legions, and thus expanding territory is the only way to win. Each game lasts up to 25 minutes. Spellcasters Chronicles is currently in early beta on PC, with more info about other platforms expected in the summertime. Another January game now, one coming for the Genshin Impact audience. Take a look at 7 Deadly Sins Origin. हमको लगा था ये फेक न्यूज़ है भाई, genuinely. In a fully open world, we dive into this official anime universe of Britannia as Prince Tristan. The original manga sold over 55 million copies, so even if you're new to it, like me, it's very much an established franchise. And yet, we will see a brand new story unfold in the game. We explore and put together a roster of heroes with unique abilities to fight a host of fantasy and sci-fi beings. Not everything is about large-scale fights. The exploration in this world has us doing smaller things, like choosing a mount. We capture animals from pigs to mythical dragons to become our travel companions. If this hits like Genshin Impact did, we have another behemoth of a game to enjoy, releasing on January 28th. Remember Mecha Break? हो गया कि launch? It released in July 2025. ये क्या बात हो गया? वीडियो का बाद चेक करेंगे यार, निकला होगा। And forced PlayStation players to sit out for a whole year. Well, the game kinda failed, and now the dev team are looking at the anniversary on July 1st, 2026 as the relaunch day for Mecha Break 2.0. The online team-based shooter that sees combatants jump into enormous Gundam-style mechs based itself around 3 principles. Defensive mechs could soak up more damage than others, support tanks could heal whilst on the battlefield, and offensive tanks could dish out more damage over time. Super simple, and it looked pretty good. Yet over time, it went from 80,000 players to just 1,000 players. And the devs feel like they know how to right this ship. We'll find out more during the year, but we expect July 1st, Mecha Break's anniversary, to be the day it is relaunched alongside the PlayStation 5 version. An early access game on PC is coming to PS5 this year. Dungeon Stalkers, a free-to-play PvPvE dungeon crawler as we venture into dungeons and begin our hunt for treasures, avoiding traps and fighting off minions that protect them. All the while, other players are doing the same thing, and eventually you'll bump into each other. Dungeon Stalkers has the same fear of loss as extraction shooters do, as an ambush could happen at any second. The community has continued to give feedback, with combat the main sticking point due to how slow and tactical it is. Dungeon Stalkers currently has mixed reviews on PC early access, and we expect many of these things to be rectified before the official launch. So, how many open world gacha anime games have been in this video so far? I honestly can't keep up, so here's another one, Silver Palace. This time we are in a Victorian steampunk city and play as a detective. Everything we see has been evolved by a new rare element called Silvarium, and every power-hungry official wants to control it, some hidden in the shadows. Tensions have risen across the city and we are tasked with sleuthing out the bad guys. There's also a supernatural element, as in the trailers we can sense if people in the streets are hiding their true identities like a werewolf. Looks pretty cool to me. Silver Palace is aiming for a 2026 release and all the platforms are in the description. And back to January one last time, as Arknights Endfield arrives. This is a 2-in-1 action RPG and factory simulator, and somehow those two very different things work really well. We find ourselves on the moon resurrecting an old mining facility, and while it's pumping out resources, we are exploring Talos 2, finding secrets, defeating enemies, and keeping everything safe. Oh, and slowly unlocking our memories because we have good old amnesia. The mix of action and exploration with base building and management, who thought it would be possible? Well, it is. Arknights Endfield lands on January 22nd. And finally, again... Arknight आ चुका है, ठीक ना? इंस्टॉल करने गए थे, पर अभी जंक्शन का लेटेस्ट अपडेट आया था ना, तो वो खेल रहे थे, तो सोचा उसको कंप्लीट करने के बाद करेंगे हम। उसके बाद करेंगे। तो आर्कनाइट का 7 डेडली सिंस आ गया यार। हम चेक करेंगे इस वीडियो का बाद ही, हम जाके एकदम रेडी है अब तो। Game that has been on this list for years now and always brings with it absolute confusion. Path of Exile 2. In 2026, this game will be finished and therefore it will be released for free.
The isometric dungeon crawling RPG was so well received in paid early access, it's been there for over a year now. It's honestly absolutely worth the fee to play due to the depth of the character classes alone, but this video is about free games, so I checked the official line, and yup, 2026 is the year this beauty leaves early access and becomes what it promised to be all those years ago, a free game. And that was 20 free games coming in 2026. I'm Adam, you're awesome, see ya! लेट्स गो। बहुत सारा गेम है जिसमें हम एक्साइटेड है। मतलब बिल्कुल फर्स्ट तो अनंत था, ठीक है ना, अभी तो जाके हम 7 डिजिटल सीन्स का चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं खुद अभी करने वाला हूँ हम्म। डेफिनेटली। मेरा तो खुद का यही है, अभी मिनिमाइज करूंगा, सबसे पहले 7 डेडली सिंस ओरिजिन को सर्च करूंगा कि भाई साहब कौन सा है, क्या है, कहाँ से करना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं गाइस, ठीक ना। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और तुम लोग हम बाय लोग बाय। कमेंट्स में और गेम सजेशन दे सकते हो, ठीक है, तो करें। और आके आप देखो, वैसे तो अभी तक हम हमारे मेन चैनल्स को इससे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट यू गाइस टू एक्सप्लोर दिस एंड टेल अस दैट व्हाट यू वांट। हम्म। तो आप जब बोलोगे हम लोग इस पे भी, हो सका तो हमारे मेन चैनल पे भी कैसे भी करके स्ट्रीम करके आपको बढ़िया बढ़िया गेम दिखाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। आपका काम है आकर हमको सजेशंस देना, देखना और हमको मोटिवेशन देना, जिससे हम लोग कुछ करने का और ट्राई करें। हम्म। क्योंकि एक होता है ना कि एक हम लोग रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट करके खेल सकते हैं, पर ऑडियंस जो वो देखना चाहे, तुम लोग जो देखना चाहे हो, क्योंकि बनाने में हमको ही मजा आएगा, क्योंकि हमको अच्छा लगेगा कि मान लो हम कोई गेम खेल रहे हैं और पीछे तुम जितने भी लोग हो, तुम लोग आ रहे हो, देख रहे हो, हमको सजेशन दे रहे हो कौन सा चैलेंज करना चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है और खेलने में भी मजा आता है। तो रहता है कि यार ठीक है, किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी के लिए खेल रहे हैं, और अगर कोई ऐसे गेम्स है जिसके अंदर आप भी हमारे साथ खेल सकते हो, तो आओ खेलो। तो लगेगा कि ठीक है यार, मजा आ रहा है। अब एक बहुत सारा अच्छा अभी जो हेल्थी पॉपुलर गेमिंग स्ट्रीमर है, एनवायरनमेंट। अभी सब जो पॉपुलर स्ट्रीमर्स है, वो वही गेम पे लगे हुए हैं जो उस पर व्यूज आ रहा है, या आ रहे हैं ब्रेन रॉट में लगे हुए हैं। स्टोरी नहीं तो जेन्युइनली बोल रहे हैं, अगर कोई पुराना भी गेम है, अगर चाहते हो एक्सप्लोर करना, जैसे मेरा फेवरेट जंशिन था, कर ठीक रहे ना। हम जंशिन मतलब जब से आया तब से खेल रहे हैं, तो हम सोचे इसको क्यों ना एक्सप्लोर कराते हैं। तो इसको इतना सारा वीडियोस दिखाया जंशिन का, फिर कैरेक्टर ट्रेलर्स दिखाए, फिर अलग अलग चीज़, अभी गेम प्ले भी धीरे से हम लोग इंटर करने ही वाले हैं। तो अभी ये सब एक्सप्लोर करने के बाद और भी कोई गेम है जो पुराना नया रेट्रो, मारियो भी खिलाएंगे अगर तुम बोलोगे तो इसको तो। अरे अरे तुम लोग वो छोड़ो, तुम तो अभी ये बताओ दाढ़ी बाल काटने की है कि नहीं, यही चलेंगे। भाई तो थोड़ा बोर हो रहे हैं इन दिनों। चलो, बाय बाय गाइस, बाय गाइस। सायोनारा।